ग्लोबली हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि आजकल कुछ सिखाना नहीं पड़ता. बरोबर. इंटरनेट इज चैट जीपीटी को भी पूछो, प्रोसीजर बता देगा कि साड़ी ऐसी नहीं, अब ऐसे करो. यस यस यस. वाओ. तो साड़ी भी मैं अगर डालती हूँ या कुछ आई एम वेयरिंग समथिंग वेरी एक्सपेंसिव आल्सो साड़ी. He do not say anything. कुछ भी नहीं. But that's why you have your followers, a huge number of followers to let you know. मगर वो पैशन मेंटेन करने के लिए फाइनेंस कहाँ से आता है? तो उसमें तो कोई रोक टोक नहीं. It means anyhow he is supporting me. तुमची कुठली साडी अजून एक तर असेल की अशी खूप आवडते की ज्यात तुम्ही त्यांच्या समोर गेला जर त्यांना ती आवडतेच. ऐसा कोई दिन ही नहीं मैं होलसेल इनको पसंद हूँ. Oh, nice. So hi everyone, I am your RJ Shravan. Today I am here for a very special podcast. We have the one and only, the very graceful and a very versatile personality. Yes, I am talking about Meena Suryavanshi. So first of all, welcome to this podcast, ma'am. सगळ्यात पहिले तर मला सांगा की कशा आहात तुम्ही? Thank you, Swara. Yes. For being here with me. Yeah. And I'm very fine. मला हे पण जाणून घ्यायचंय कि पहले मॉम, फिर अभी सैसी मॉम, और अभी ये भी कह सकते हैं कि नाउ शी इज अ ग्रैंड मदर ऑल्सो, बट इट डजंट लुक लाईक दॅट. सो हा जो पूर्ण एक जर्नी आहे तुमच्या आयुष्याची, सो त्याबद्दल आम्हाला थोडं सांगा. I am born and brought up in Nagpur. ओके. And married in Nasik. But he being an IAS officer, we have been staying in different locations and with the transfers. So every time I got to know many cultures, different places. That made me a multifaceted person. It gave me to grow as an individual, as a person also, and as a talent also. And the best thing, I adapted. वाव, अमेझिंग. And being a mother, so that is the most beautiful thing in life. आणि या पृथ्वी तलावर सगळ्यात सुंदर काय जे असेल नातं असेल ते आई बनण्याचं. नक्कीच. आणि मग मला हे पण विचारायचं आहे तुम्हाला की जसं इतक्या खूप जागी तुम्ही फिरल्या आहात, म्हणजे काही ठिकाणी तुम्ही राहिल्यात किंवा काही ठिकाणी तुम्ही फक्त फिरायला गेल्या, सो त्यामध्ये अशा ज्या गोष्टी होत्या, सो तिथून तुम्हाला ही साडीची जी एक हाऊस होती किंवा साडी घालायला खूप आवडतं, हे तिकडून आलं की आधीपासूनच होतं? नाही, ॲज अ फिमेल आपल्याला ते कुठेतरी इन्क्लिनेशन असतंच साडीचं. आपण आपल्या मदर्सला बघतो, ग्रँड मदर्सला बघतो, ते तर आपल्याकडे इनबिल्ट येतच येतं डेफिनेटली. पण जेव्हा ट्रान्सफर्सच्या वेळेला मी बऱ्याच ठिकाणी जायची, तर एव्हरी रिजन हॅज देअर ओन व्ह्यू. एव्हरी लोकेशन. सोलापूर झालं, तिथे मग इरकल, थोडं कर्नाटक बॉर्डरला गेलं की इरकल. इकडे तुम्ही नाशिक साईडला गेलं की तिथे जवळच तुम्हाला हे येवला आहे, पैठणीचं तुम्हाला. सो एव्हरी न्यू प्लेस इंट्रोड्युस्ड मी आर्टिस्टिक कल्चर ऑफ द व्ह्यूअर्स. Because these artists, they speak their language of love, language of expression through their views. एक्झॅक्टली. हे जे पण काय आहे कलाकृती म्हणू this शकतो. is just an love for fabric, love for designing and love for our culture also with heritage. बरोबर. सो मॅम, मला आणखी तुम्हाला एक विचारायचं आहे की जसं म्हणजे इतक्या साडीज आहेत, त्यामध्ये वेगळे प्रकार, वेगळे पॅटर्न्स, सो त्यामधून सबसे बेस्ट तुम्हाला कुठली वाटते? The hardest question. Ultimately Paithani. Ultimately Paithani. Yes, I have huge collection of Paithanis. And I prefer draping Paithanis during the most auspicious times. Yeah. It's heavy to carry also. And it is not that is pocket friendly. बरोबर. But then पॅशन इज अ पॅशन. या, ट्रू. आणि आता पण जी तुम्ही पैठणी घातली आहे त्याबद्दल आम्हाला थोडंसं सांगा की जो कलर आहे, जो एक ऑथेंटिसिटी या पूर्ण पैठणीमध्ये आहे, आणि या म्हणजे ते असं बघितल्यावरती डोळ्याला असं वाटतं की वाव, काय आहे हे. सो ते कुठून आणलं आणि कसं तुम्हाला ते मिळालं? येस, मेंटेनिंग माय पॅशन. मी बऱ्याच रिजन्सचे, म्हणजे ऑल ओव्हर इंडिया, आपल्या इंडियामध्ये बरेचसे आहेत, बरोबर, साडीजचे प्रकार आहेत. मग ते सगळं
समजा तुम्ही तिकडे साऊथ कडे गेलो तर डेफिनेटली कांजीवरम हो. द मोस्ट Yes. I love it. I love कांजीवरम. And that is the best fabric. I'll tell you. म्हणजे जर तुम्ही मला पर्सनली विचाराल, ड्रेपिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू, बॉडी हगिंग अँड द लाईट वेट, Kanjivaram, it is unbeatable. Yeah. Such a vibrant range of sarees are available in India. ये आपको सोचना है कि आपने क्या खरीदना है, क्या खरीद सकते हैं. जस्ट लाईक लँग्वेजेस, जशा इतक्या साऱ्या लँग्वेजेस आहेत तसंच खूप साऱ्या साडींचा प्रकार आहे. म्हणजे मतलब अभी तो वो एक एरा आ गया है साड़ियों का जिसमें एक साइड ऐसा है कि कुछ लोग हमारी संस्कृति छोड़कर कुछ तो भी मॉडर्नाइज अपना रहे हैं, और वही मॉडर्न जैसे कि यूएस या फिर फॉरेनर्स इंडिया में आके सिर्फ साड़ियों के लिए वो कलेक्शन के लिए आ रहे हैं. सो आपल्याला ती गोष्ट कळायला हवी की आपल्याला किती जपायचं आहे त्या गोष्टीला. ऑल ओव्हर द वर्ल्ड दे लुक अपॉन अस फॉर आर दिस सम एक्सक्लुसिव्ह काइंड ऑफ व्ह्यू. हे जे आपण ड्रेप्स आपण वापरतो साडी एक्सक्लुसिव्ह आहे. दे वंडर हाऊ अ 5 मीटर ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ कॅन डेकोरेट यू एनी सो ब्युटिफुली. And then recently my daughter got married. Oh. So we have some international guests. Okay. So sir said ki please give them something exclusive. What I did, Sari. I bought paithanis. Oh. Not sarees, paithanis. Your favorite. And then it was heavy, handmade. And when I gifted them, when they saw on the room, and then they asked me, "Ma'am, how to drape this? It's so heavy and it's so like bright and everything." I said, I'll send you the videos how to YouTube. drape the saree. And as world is सच ग्लोबली हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि आजकल कुछ सिखाना नहीं पड़ता. बरोबर. इंटरनेट इज चैट जीपीटी को भी पूछो, प्रोसीजर बता देगा कि साड़ी ऐसी नहीं, अब ऐसे करो. yes. And then I gave that links की how to do this, and they had sent me the photographs. Oh. And it's awesome. Amazing. I would love to see those pictures. And मला हे पण विचारायचं आहे की जसं आता सरांची टेस्ट आणि तुमची टेस्ट खूप गोष्टी रिगार्डिंग सारीज तर ही मॅच करते का? उनकी टेस्ट सिर्फ मैं हूँ, बाकी कोई टेस्ट में उनका कुछ ही डोंट हैव एनी ओपिनियन रिगार्डिंग एनीथिंग इन लाइफ. ओह 2 बार खाना मिल जाए, सुबह से शाम तक ऑफिस करने मिल जाए, पब्लिक सर्विस में काम में हो जाए, ही इज हैप्पी विद दैट. सच अ कंटेंट पर्सन, आई टेल यू. जो दुनियादारी है सब मम्मा, एवरीथिंग डन बाय मम्मा. वाओ. तो सारी भी मैं अगर डालती हूँ या कुछ आई एम वेयरिंग समथिंग वेरी एक्सपेंसिव आल्सो सारे, he do not say anything. कुछ भी नहीं. But that's why you have your followers, a huge number of followers to let you know. मगर वो पैशन मेंटेन करने के लिए फाइनेंस कहाँ से आता है? तो उसमें तो कोई रोक टोक नहीं. It means anyhow he is supporting me. Yeah. Anyhow. Yeah. And he believes कि मीनू जो कर रही है best, and she's taking care of her passion. So that is the most wonderful thing in life. Yeah, so there are like types of people, जैसे introvert, outrovert, ambivert, and he is a wifovert, I can say. ये आपको बाकी लोगों से पूछना पड़ेगा. I cannot say. Okay, so अशी आतापर्यंतची लाईक इतना ह्यूज कलेक्शन आय कॅन सी अँड आय कॅन इवन इमॅजिन की किती ह्यूज कलेक्शन तुमच्याकडे साडीजचं असेल. सो त्याच्यामधनं सगळ्यात एक्सपेन्सिव्ह साडी कुठली आहे तुमच्याकडे? Oh my God, this question, don't leave me. I can't say that. मी आय वॉन्ट टू नो की ऍटलीस्ट थोडंसं ग्लिम्स द्या की किती महाग तुम्ही साडी आतापर्यंत घेतली आहे. You have to understand, this is Paithani. Yeah. See the weft. The tissue in blue thread. Yeah. The border is gold. Yeah. The work is done extensively and intricate work. जो हाथ से ही बना हुआ है. That is actually so This exquisite. is a labor of love. Yeah. तो जितना लेबर ऑफ लव का वैल्यू है उतना ही साड़ी का वैल्यू है. इनडिरेक्टली पण नाही पण डिरेक्टली पण नाही. कशाच प्रकारे तुम्ही या क्वेश्चनचा आन्सर दिलं नाहीये. एनिवेज, सो सरांना सगळ्यात जास्त तुमची कुठली साडी अजून एक तर असेल की अशी खूप आवडते की ज्यात तुम्ही त्यांच्या समोर गेला तर त्यांना ती आवडतेच? ऐसा कोई दिन ही नहीं मैं होलसेल पसंद हूँ. नाईस. आणि जसं एक होत आहे जनरेशन टू जनरेशन. सो नाऊ यू आर अ ग्रँड मॉम. ऑफकोर्स आता तर मुलगा झाला तर त्याला आपण ऑफकोर्स नाही घालून देऊ शकत, बट तुमच्या मुली त्यांना ऑफकोर्स तुमचं साडी कलेक्शन आवडत असेल. सो त्यांच्यामध्ये ती गोष्ट आली आहे का तुमची?
अरे भाई कबर्ड में से धीरे से पुल अप करते हैं ओह and they plan to wear it something on a special occasion and they do it. Pulling saris from my wardrobe is equal to shopping for them because I won't ask them back कि मेरी वापस करो. तो it's such a beautiful feeling. It's a beautiful feeling. So एक जगह होता है विंडो शॉपिंग और एक जगह है आपके बेटियों का कबर्ड शॉपिंग. So my walk-in is the major shopping thing place for them. Wow. Perfumes, purses and sarees. So तुम्हाला साडी सोबत अजून कुठली अशी गोष्ट आहे जी खूप फॅसिनेट करते, जसं एक पॅशन असतं आणि एक फॅसिनेशन असतं. सो साडी सोबत अजून अशी कुठली ती असं एक ब्लेंड असतो ना, जसं आता मला जर मी हे घातलंय तर याच्यासोबत मला हील माझी तशीच हवी. सो अशी कुठली गोष्ट आहे जी साडी सोबत तुम्हाला नक्की आवडते? अभी मैं जिस फेज में हूँ मेरे लिए कंफर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. या लाइक एसेसरीज और एनीथिंग. बस साड़ी अच्छी हो जाए और एक छोटा सा मंगलसूत्र भी हो जाए तो आई एम फाइन विद इट. ऑफ कोर्स मोबाइल बट एज सच अभी कोई ऐसी चीज नहीं रही जो आई एम नॉट सेटिस्फाइड और आई वांट दिस ओनली. दैट फेज हैज गॉन कि हम मैचिंग पहन लेते थे, समथिंग वेरी मैचिंग इन जैकेट्स हो गए, बेल्ट्स हो गए, सैंडल्स हो गए. यस डेफिनेटली सनग्लासेस. ओह माय गॉड, आई हैव राइट नाउ आई एम हैविंग अराउंड 50 to 55 sunglasses. Oh my right God. now. Wow. But nowadays I won't use because now I am using the specs. Yeah. So it is hurdle for me. Oh, धीरे धीरे मैं dispose कर रही हूँ, किसी को दे रही हूँ, कर रही हूँ. Oh, I am here. Thank you so much. Yes, I'll definitely call you. And one more question की जसं युनिकनेस, देर आर युनिक साडीज, युनिक पॅटर्न्स ऑफ साडीज. सो अशी कुठली साडी आहे जी तुम्हाला आतापर्यंत सगळ्यात युनिक वाटली आहे, सगळ्यात जास्त, आणि यू हॅव दॅट इन युअर वॉर्डरोब? Unique, each piece is unique, I'll tell you. क्योंकि I specially drape only handlooms. You will never see any this artificial thing over me. So people look upon me, they know that she's carrying something very heavy thing and something heritage piece. People know that. For me, all my sarees are my love. Because I buy them with something in mind, some special occasions, some special things. जैसे सर मुझे sometimes मीनू हे गे तो लगा जे पाहिजे ते तो आई रिमेम्बर. और ऐसे भी बहुत सारी साड़ीज है मेरे पास में जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती थी तो तबीयत ठीक करने के लिए आई यूज्ड टू गो फॉर शॉपिंग. कि आई एम फीलिंग वेरी लो, देयर इज नो एनर्जी एंड आई नीड सम बूस्टिंग, तो आई यूज्ड टू शॉप. उस चक्कर में भी काफी साड़ीज होती है. Amazing. Such a nice trick you have given. बट सबसे यूनिक साड़ी वही है जो मैंने शादी के दिन पहनी थी. बनारसी साड़ी, बनारसी जंगला जाल साड़ी. And I'm still possessing that in a very good condition. And I'm going to pass it on to my daughters. Amazing. We just want to see the pictures. आम्हाला प्लीज ते पिक्चर्स पण दाखवाल त्या साडीचे. आणि म्हणजे जितके पण लोक आपल्याला आत्ता ऐकत आहेत किंवा बघत आहेत, मला त्यांना पण हे विचारायचं, लाइक त्यांच्याकडून तुम्हाला हे विचारायचं है कि सबसे इजी टू वेयर जो साड़ी आती है, मतलब अभी बस पहनना और निकल जाना है, कंफर्ट जो साड़ी में आएगा, तो वो कौन सा सिल्क या कौन सा पैटर्न होगा? Soft silk from south. Okay, soft silk from very south. body hugging sarees and light weighted also. Okay. See, everybody selects the saree as per their budget definitely. Some few like heavy sarees, few like lighter weight sarees, and few like the artificial thread saree. So it is upon you what is your choice. कभी कभी क्या होता है, ऐसा नहीं है. सी मार्केट में हैंडलूम्स तो बहुत है, मगर जो व्यूवर्स को बिजनेस करना है, सारी बिजनेसेस जो होते हैं या जिनको नहीं वो तो कुछ सिंपल सी साड़ी लेके 2-3,000 की लेके भी अपना शौक पूरा करते हैं. इट लुक्स ब्यूटीफुल, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ड्रेपिंग दोस साड़ीज, बट थिंग इज दैट कि उसकी जो ब्यूटी समझने के लिए, हैंडलूम वगैरह समझने के लिए, ये आपको हैंडलूम की दुनिया में जाना पड़ेगा. और ये हैंडलूम की दुनिया में जाने के लिए आपको बहुत
बजेट लेके चला. पैसा खिशात घेऊन जावंच लागेल. Yes, डेफिनेटली. आणि मॅम जितके पण लोक आता अगेन आपल्याला बघत आहेत, सो त्यांना तुम्ही काय म्हणू इच्छितात? लाईक साडी डे आहे, सो त्याच्याबद्दल किंवा आपली संस्कृती जपायलाच हवी. अँड साडी इज आर संस्कृती, अँड फॉर यू इट्स अ पॅशन, इट्स लव्ह, अँड इट्स ऑलमोस्ट एव्हरीथिंग फॉर यू. आणि एवढं मॉडर्नाइज म्हणजे इतक्या ऑफकोर्स सरांसोबत एक तो पूर्ण फेज आणि इतकं पूर्ण आयुष्य घालवल्यानंतर एक वो मॉडर्न टच ऑफकोर्स सब में आता है. सो त्या मॉडर्नाइज जनरेशनमध्ये तुम्ही आपल्या रूट्सला घेऊन चालत आहात. सो यही एक प्रेरणा हमें आपसे मिलती है. सो याबद्दल तुम्ही आम्हाला सगळ्यांना काय म्हणू इच्छिता? सगळ्यात पहिले हे मिसकन्सेप्शन आहे की साडी म्हणजे कल्चर. नो, साडी म्हणजे स्ट्रेंथ. ओके, वाव. It's empowerment. Yeah. Because like you're talking to me right now. Talking to me, you're falling in love of sarees. Yeah. धीरे धीरे you will grow that Thing in you. Yeah. love in you. So I'm empowering you towards this heritage. Yes, saree is strength, saree is empowerment, saree is power, saree is in bracket WOMEN. That is so many men equals to woman. Yeah. Wow. So it is not associated with the types of saree. It is associated with the strength. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. अमेझिंग, अमेझिंग. अगेन मॅम, वन मोर क्वेश्चन की इतकं ह्यूज, इतक्या जागी आहेत म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या साडीजचे पॅटर्न. सो तुम्ही अशी ती कुठल्या मतलब कौन से वो ऐसे जाते हो, ऐसी वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपको पता है कि ये जो मुझे चाहिए यहाँ पर ये मिलने ही वाला है, और वो या फिर ढूंढा है आपने? Sir is always there for the Vidhan Sabha elections and the Lok Sabha elections. So we have to tour out for entire country as an election officer. So there are 8 days time duration where families are allowed. Okay. Oh. Yeah. So with that, I had almost visited many places in India. And then when I start my journey, I just go through the geographical availability and the speciality of that region. तो अभी हम दार्जिलिंग में गए थे, तो मैंने वहाँ से पूरे बालूचेरीज and quite a good sum of this lal par. I got it from there because I went to that region in the interior region. Oh. Okay. And then recently this Lok Sabha election, he was given Telangana. Okay. So from Telangana there is 1.5 hour distance. It is चांदूर करके है. वहाँ पोचमपल्ली का एक छोटा सा पोचमपल्ली का वीवर्स का पूरा एक छोटा सा ये है, बस्ती है वहाँ. एंड हाउ इतने पुअर कंडीशंस में है वो लोग. आई विजिटेड दैट प्लेस. And my specialty is also that ki I do not, I 40% only I shop from the showrooms or any shop. बाकी local market. I usually prefer the original weavers and the original place. Wow. तो that is a great vision. हाँ. तो because I know this कि अभी weavers का क्या फिलहाल what conditions, the petty conditions they are living and each art is getting extinct. मगर हम अगर उनको पुश देते हैं तो क्योंकि कोविड के समय में ना क्या हुआ था, काफी सब बंद हो गया था. एंड ये वीवर्स का ऐसा था कि आज बनाओ कल बेचो और खाओ. एग्जैक्टली. बहुत पुअर कंडीशंस होती थी कोविड के समय में. तो देन दैट टाइम आल्सो वी एज अ फेडरेशन फ्रॉम द एसोसिएशन वी कलेक्ट लाइक टॉक विद देम एंड कलेक्टेड द साड़ीज. उसको ऑनलाइन हमने सब में डिस्प्ले करवाई एंड जो हमको चाहिए थी घर बैठे हमने शॉपिंग की एंड देन दैट वाज डिस्पैच्ड. वाओ. या तो कोई पर्सन आ गया था या ऐसा, तो somehow or the other way we are helping them. We were helping that time. Yes. And that made so much impact that even though viewers started understanding कि ऐसा करने से कनेक्टिविटी बनाने से आजकल ये लोग इंटरनेट वगैरह सब यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम. मगर इसमें और एक शॉकिंग बात आपको पता नहीं होगी कि जो ओरिजिनल व्यूवर्स होते हैं और उनकी जो फैमिलीज होते हैं, they are hardly on Instagram or Facebook.
बिकॉज दे डोंट हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टेक्निकल एस्पेक्ट, है ना. तो ये कोई मिडिल मैन या जो पर्सन हु वांट्स टू एक्सट्रैक्ट आउट बेनिफिट एंड प्रॉफिट फ्रॉम इट, He'll he make the will one, yeah, he will display that unofficial fake account. yes. And then from there they, तो प्राइसिंग का भी डिफरेंस 4 folds 5 folds हो जाता है, Yeah. क्योंकि हैंडलूम है, दे इट इज हैंडलूम. तो उस वक्त फिर वो आई वेंट टू चांदूर, आई बॉट सो मेनी साड़ीज, और इतने उनके घर में फैन नहीं है, हम खटिया में बैठे थे. वो देख के बहुत मन में आई फील बैड फॉर इट. एट द सेम टाइम व्हेन आई ड्रेप दैट साड़ी, आई गॉट ह्यूज कॉम्प्लीमेंट्स. तो ये इन लोगों की तरफ ध्यान तो देना बहुत जरूरी है. बस दिस इज द ओनली वे वी कैन हेल्प देम एज अ इन्फ्लुएंसर. आई फील दिस इज द ओनली वे, एटलीस्ट वॉट एवर शेयर दे मस्ट बी गेटिंग, बट दिस इज द वे. तो साउथ में ऑल्सो इंटीरियर्स में जो एरियाज होते हैं वहां भी जाकर हम शॉपिंग करते हैं. एमपी में जाके चंदेरी साड़ी भी हम ओरिजिनल प्लेस से खरीदते हैं. बहुत डिफरेंस होता है, बहुत डिफरेंस होता है. और ये सब कुछ हम आपके प्रोफाइल पे भी देख सकते हैं, राइट? Yes, definitely. You can see, but there I cannot express so many things कि ये कैसा क्या है. But indirectly these are coming to the maximum of the influencers जो serious influencers हैं, heritage influencers. We are anyhow some or the other way we are connected. हम रेफर करते हैं, रेफरेंसेस लेते हैं कि कहाँ क्या अच्छा मिलेगा, और हम then we share the original address, and then we buy those sarees. अमेजिंग. मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी कि देख लो, तानिया मित्तल की एक्चुअल टक्कर आ गई है हमारे पास में. नहीं. एक्सप्लोर सारीज विद मीना करके इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी है, वहां पर आप देख सकते हैं. बाकी ऐसे ही बने रहिए. थैंक यू.